Hello my dear students, welcome to the Sunrise Education Odisha. So our previous class was a verb. Today we learn modals. Auxiliaries are modals. So notice your fair copy. Then auxiliaries साहाय्यकारी क्रियापद. Auxiliaries first verb is divided into two parts: main verb, auxiliary verb. Main verb and auxiliary verb. Main verb मुख्य क्रिया go, play, eat. Go, play, eat, come, climb, combine, etc. These are main verbs. Auxiliary verb is divided into two parts, that is primary auxiliary and modals. Primary auxiliaries is, am, was, are, were, been. Am, was, been, do, did, done. These are primary auxiliaries. Primary auxiliary is, am, are, was, were, have, had, do, did, done, etc. Primary auxiliaries. Then modals. Modal is divided into two parts: paired forms, will, would. Past form of will, would, shall, should, may, might, can, could. That is paired form. Modal is divided into two parts. One is paired form and a single form. Paired form and a single form. Paired form: will, would, shall, should, may, might. Past form of may, might. Can, could. It is a paired form. जोड़ी कर दौरान paired form: will, would, shall, should, may, might, can, could. Then single form is divided into two parts, that is pure and semi. Pure part re must, ought to. Pure asla must, must, ought to. Then semi: need, dare, used to. Semi asla need, dare, used to. Okay, so this is the verb. First verb is divided into main verb and auxiliary verb. Auxiliary verb is divided into two parts: primary auxiliary and modal. Modals are divided into two parts: paired form, single form. Paired forms: will, would, shall, should, may, might, can, could. Then single form is divided into two parts, that is pure or semi. Pure must, ought to. Semi re need, dare, is your modal auxiliaries. Let's know some important features of the modal auxiliaries. Let's know some important features of the modal auxiliaries. Important feature, मुख्य वैशिष्ट्य सब. First, like primary auxiliaries, modal auxiliaries are not changed with the number or person of the subject, noun or pronoun. Like primary auxiliaries, modal auxiliaries are not changed. Modal auxiliary परिवर्तन हुए नहीं with the number or person of the subject, noun or pronoun. Mane that means it always he can sing, I can sing, they can sing. It can or can's
हो नाही ही कैन सिंग आई पाखे कैन बसला ही पाखे भी कैन बसुची दे पाखे कैन बसला सो लाइक दिस सो लाइक प्राइमरी ऑक्सिलरीज modal auxiliaries are not changed with the number or portion of the subject noun or a pronoun. Okay. Second point, they don't usually act as main verbs, they act as a auxiliary verb. The main verb भावे sentence रे व्यवहृत हुए नहीं. They don't usually act as main verbs, they act as auxiliary verb. auxiliary verb भावे काम करती sentence रे. They have single forms of all subjects. सब सब्जेक्ट पाई सेवार सिंगल फॉर्म रोच सिंगल फॉर्म और थर्ड पर्सन जमी एस एस बाड कर मोडाल ओनली कैन और मे और माइट सेल गुड़ा सब यूज हो दे हैव सिंगल फॉर्म्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टू मोडाल कैन नॉट गो टुगेदर इन ए सिंपल सेंटेंस गोटे सरल वाक्य रे दुईटी मोडाल रही पारिबे नाही टू मोडाल्स कैन नॉट गो टुगेदर इन ए सिंपल सेंटेंस modals have no non-finite forms as primary auxiliaries. Modals have no non-finite forms as primary auxiliaries. Primary auxiliary भली आर non-finite form नहीं. They have no non-finite forms. Modals are always finite verbs. Modals are always finite verbs. That means you can trust any words. You can trust any words. Here can is a finite verb. Ramesh should take part at the meeting. Ramesh should here finite verb. Should here finite verb. All the modals are followed by the bare infinitives. Bare infinitive. पूर्वर टू add हेबो नाही verb पूर्वरु. So all the modals are followed by the bare infinitives. That means in example, a camel can live without water for a week. Here can live. Can next to live हेबो ना. इटी live हेला non-finite verb. A camel can live without water for a week. That is, all the modals are followed by the bare infinitives without to. भरपूर टू बसब ना ये लिव पूर्व टू बसी ना. दैट इज bare infinitive or zero infinitives. A camel can live without water for a week. यूज ऑफ modals modal रो व्यवहार सेल एंड विल. सेल इज यूज्ड विथ आई और वी टू एक्सप्रेस प्लेन फ्यूचर परमिशन प्रॉमिस ऑर्डर ऑफर etc. ओके. सेल इज यूज्ड with I or we to express plain future, permission, promise, order, offer etc. Example, I shall be 15 tomorrow. That is plain future. I shall be 15 tomorrow. Plain future. We shall be back in an hour's time. आम घंटा भितर फेरी आसबू. We shall be back in an hour's time. That is promise. Shall I go home now? मु बर्तमान घर को जीवी कि परमिशन. इन केस ऑफ परमिशन. Shall I go home now? परमिशन. I shall help you. ऑफर. तो ऑफर करछे. I shall help you. मु तुमको साहाय्य करिबी. I shall help you.
that is offer. Second, shall is used to denote threat or compulsion. Shall is used to denote threat or compulsion. Threat माने धमक देबा, threatening जोटा आम कहूचे, threatening धमक देबा, threat और compulsion, compulsory noun compulsion, धमक बाध्य अर्थ रे, threatening है धमक देबा, compulsion बाध्यतामूलक, बाध्य अर्थ रे ये आम shall यूज करछे. Except I and we, I और we व्यतीत. Example, you shall write your answer before you leave. You पाखरे shall, you पाखरे हम साधारणतः will यूज करछे. When we use shall, that is you shall write your answer before you leave. तुम्हें जीवा पूर्वरु आंसर टा लिखि दे जीवो. That is compulsion. माने बाध्य, तुम्हें लिखिबा को बाध्य. You shall, सेति यू पाखरे shall बसिला. You shall write your answer before you leave. तुम्हें जीवा पूर्वरु तुम्हें ये आंसरटा लिखिदेव. बाध्य मैं लिखापी तुम बाध्य. यू शैल नॉट यूज माय मोबाइल अगेन. यू शैल नॉट यूज माय मोबाइल अगेन. तुम्हें पुनर्बार मोर मोबाइल व्यवहार करना. दैट इज ए थ्रेटनिंग. आम तो धमक दौचे. सो इन दिस केस वी यूज शैल. यू शैल नॉट यूज माय मोबाइल अगेन. नेक्स्ट यूज ऑफ विल. विल रो व्यवहार. विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लेन फ्यूचर. विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लेन फ्यूचर, विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, प्रेडिक्शन etc except the subject I and we. Will is used to express plain future, willingness, request, prediction etc except the subject I and we. I और we subject व्यतीत will आम व्यवहार करछे इन केस ऑफ दैट इज willingness, plain future, request, prediction etc. Example, सीमा will be 15 next week. आसंता सप्ताह को सीमा को 15 वर्ष हेबो. सीमा will be 15 next week. That is simple future. Simple future. Will you do me a favor? Will you do me a favor? तुम्हें मो सपक्ष रे कहबो कि रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट करछे. Will you do me a favor? यू पाखरे will बस. That is here it is request. Will you do me a favor? Request. It is question mark. He will come back in time. से ठीक समय फेरी आसब. प्रेडिक्शन भविष्य आगामी कथा आम कौचे भविष्य कथा. ही विल कम बैक इन टाइम. दैट इज प्रेडिक्शन. दे विल हेल्प मी. से माने मते साहाय्य करिवे. दे विल हेल्प मी. इट इज willingness. willingness. यूज ऑफ मे माइट. मे माइट. मे रे पास्ट फॉर माइट. सो आस्किंग फॉर परमिशन. अनुमति क्षेत्र में आस्किंग फॉर परमिशन. मे आई गो आउट सर. बाहर को जापे कि येस यू मे. मे आई गो आउट सर. मे आई गो टू नाइट. नो यू मे नॉट. येस नो क्वेश्चन. यो नो यू मे नॉट. मे आई गो आउट टू नाइट. नो यू मे नॉट. इट इज परमिशन. इन केस परमिशन यूज ऑफ मे. देन पॉसिबिलिटी. संभावना. संभावना अर्थ रे मदर मे बी इन द किचेन. माँ रोषे घरे थाई पारती. मदर मे बी इन द किचेन. ये संभावना अधिक मे यूज कर. मदर मे बी इन द किचेन. संभावना अधिक जे माँ रोषे घरे थाई पारती. मदर माइट नॉट बी इन द किचेन. ये संभावना कम. माँ रोषे घरे थिबार संभावना कम जो आम माइट यूज करछे. मदर माइट नॉट बी इन द किचेन. से तो रोषे घरे थाई न थाई पारती. ये संभावना कम इन केस ऑफ माइट. ओके. इट इज द यूज ऑफ मे एंड माइट. यूज ऑफ नीड एंड डेयर. नीड डेयर.
These two modals are usually used only in negative and interrogative sentences. Need and dare. These two modals are usually used to. ये दुटी मॉडल साधारणतः व्यवहार करा जाए आर यूजुअली यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नास्ति सूचक आ प्रश्नवाचक वाक्य मानक नीड और डेयर आम यूज करुचे एग्जांपल यू नीड नॉट स्पीक सो लाउडली तो जोर कहवा आवश्यक ना यू नीड नॉट स्पीक सो लाउडली आई एम नॉट ए डीप मोटे काल नुहे जोरे कह यू नीड नॉट स्पीक सो लाउडली आई एम नॉट ए डीप यू वी नीड नॉट गो टू द हिल टॉप वी नीड नॉट गो टू द हिल टॉप वी कैन सी द टेम्पल आम तोड़ मंदिरटा देखिपे ऊपर जा दरकार ना वी नीड नॉट गो टू द हिल टॉप वी कैन सी द टेम्पल नेक्स्ट डेयर डेयर नॉट he dare not oppose his teacher he dare not oppose his teacher से शिक्षक को प्रतिवाद करने को साहस करे ना he dare not oppose his teacher the boy dare not enter the class in the teacher's presence शिक्षक श्रेणी थिबा बेले छात्रटी श्रेणी भीतर जीवाकू साहस करे नाही the boy dare not enter the class in the teacher's presence. Okay, so thank you very much. Don't forget to like and subscribe.